पता नहीं, मैं ध्यान नहीं, मैं ये देखा नहीं ना। उसके बाद फोटो देना। थोड़ा पीछे आओ कैमरा। कैंपस lama ये है। कॉलेज
हो गया खाली हो गया। हाँ मैंने खाया इसकी बंदे वो कौन सामने सर एक वेट करो। A very warm welcome to all of you. May I request all of you to please rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
The Press Council of India is honoured to have with us today the Honourable Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu ji, Minister of Information and Broadcasting and Environment, Forest and Climate Change, Shri Prakash Javadekar ji, Honourable Mr. Justice Chandramouli Kumar Prasad, Chairman, Press Council of India, Srimati Anupama Bhatnagar, Secretary, Press Council of India, the distinguished delegates from the Press and Media Councils of Bangladesh, Bhutan, Nepal, Myanmar and Sri Lanka, Shri Jai Shankar Gupta ji, convener of the jury, distinguished members, invited guests, awardees and participants. The Press Council of India welcomes your esteemed participation on the National Press Day to commemorate its 53rd year of establishment. May I now request Honourable Chairman, Press Council of India to welcome His Excellency, the Vice President of India, with a bouquet. May I request Srimati Anupama Bhatnagar, Secretary, Press Council of India, to welcome the Honourable Minister, Shri Prakash Javadekar ji, with a bouquet. May I now request Honourable Chairman, Press Council of India, Mr. Justice Chandramouli Kumar Prasad, to address the august gathering. His Excellency, the Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu, Shri Prakash Javadekar, Union Minister for Environment, Forest, Climate Change, Heavy Industry and Information and Broadcasting, Chairperson and members from the Press and Media Councils of Bangladesh, Bhutan, Nepal, Myanmar, Sri Lanka, delegates, jury members, awardees, past and present members of the Press Council of India, distinguished guests, ladies and gentlemen. I take this opportunity to convey to the media fraternity all over the world our greetings on the National Press Day. The theme of the National Press Day 2019 is reporting to interpretation, a journey. Journalists in their curriculum and during training are taught to keep their personal feelings out of their reporting. They are told to write what they know, not what they think. To play it straight and give all sides a chance to be heard. Reporting of news is often described as a coolly impersonal job. It is an art of storytelling through a process that involves the gathering of facts, selecting the facts to present the story in an objective, truthful manner without lacing it with personal opinion or subjective comments. 5 W's: who, what, when, where, and why are the golden words which guide them. A good reporter is one who always adheres to fair and impartial reporting of the story, leaving the rest to its readers to decide. Gandhi, an ardent believer in the power of the word, wrote in Young India in the year 1925, and I quote, "I have taken up journalism not for its sake, but merely as an aid to what I have conceived to be my mission in life. My mission is to teach by example and precept
under severe restraint the use of the matchless weapon of satyagraha. Therefore, I may not write in anger or malice. I may not write idly. I may not write merely to excite passion. The press has covered a long journey since then, from reporting facts to analyzing and interpreting it, but Gandhi's philosophy has not lost its relevance even in today's era, when fake news, paid news, morph news, embedded news, and baked news have overshadowed the real news. We read newspapers, listen to radios, watch news channels, or navigate through our social media pages to get information about things happening around us. Any unusual event falls under the purview of news. Today, people are being constantly bombarded with information through various news platforms, including social media, that the line between the real and fake news, truth and false news has blurred. Deep fake has become the new reality. In this fast-paced world, where people have more virtual friends than in flesh and blood, readers or consumers of news do not have the time to verify the sources of news. When the edifice of public opinion is built on the foundation of fake and half-baked news, the reality becomes trickier and even dangerous at times, especially when public resort to violence in response to fake news or misinformation. This has axed down the media credibility and human dependability on the news media. Gone are the days when people look to the media to confirm a gossip. Many times they create gossips themselves. In the initial days of the development of the press in India, it was considered to be the vehicle of social and religious reforms and political independence. With the introduction of the Constitution, people were given a pluralist, liberal, democratic polity, along with which came into focus the free press. Over the period, the press, as a mass communicator, as a representative of the people, as a voice of voiceless, and as their regular and constant spokesperson, has achieved the position of almost a natural ally of the society for its existence, projection, and well-being. Since the press enjoys an enormous power of supplying information to people that condition their mind, this has elevated the media to the most privileged and powerful position in society. Reporters have a lot of facts in their head when they turn to report. It is their legitimate right to interpret facts. Readers, in turn, look for perspective, purposive interpretation, and serious thinking. Interpretative reporting goes behind the news, brings out the hidden significance of an event, and separates the truth from falsehood. It is a combination of facts with interpretation. A reporter delves into reason and meaning of development of a story, and by using the knowledge and experience, he presents an event with explanation of the consequences it could lead to. But in the garb of interpreting reporting, journalists cannot change the very essence of the news or distort or concoct facts and enter into surmises and conjectures. Before doing that, they must look to all sides and shades and do not rush with the story. It is difficult to imagine that reporter can add meaningful perspective within hours of an event. Bob Woodward, a highly renowned investigative reporter of the Washington Post, observes that most of the high-flying interpretative reporting is generally impulsive, often silly, and mostly wrong. It breeds public cynicism. Mr. Janet Cook won the most prestigious Pulitzer Prize
in journalists for a story published in the Washington Post on drugs abuse involving an 8-year-old boy, Jimmy, injected with heroin supplied by mother's boyfriend, a story found later on to be fictitious, conceived in fraud, delivered in deceit, resulting in withdrawal of the prize. Nearer home, the glaring cases of obnoxious interpretation by the media which come in mind are the Prime Minister of India comparing the Muslims who suffered during the riots as Kutte ka Pilla, the Chehra becoming Mukhota for one of the most charismatic leaders of India and Dalit equivalent to a street dog. All these have been attributed to members of one political party, and honestly speaking, I do not know whether these are just a coincidence done inadvertently or with malice or a calculated design. These forms of misinterpretation, where spoken words are given connotations which the speaker never dreamt of, leads to loss of media credibility and are toxic for the society and ultimately lethal to the media industry. One interesting fact which I noticed is if one newspaper misinterprets facts related to an incident, it is repeated by all the media body. Thriving on sensational news or headlines could be a short-term survival strategy for the press, but comes at a very high price in the long term, given the distinct stature that media enjoys in our society. Fading media credibility is a matter of concern nationwide and globally. To address this issue of waning media credibility and accountability, the Press Council of India has this year made the deliberate choice to navigate the journey of Indian press from its days of reporting of facts to complex interpretation. Print journalism is already uncertain about its future, and in the garb of interpretation, if journalists deviate from the path of ethical journalism, no force on earth can keep newspapers from sinking in the rising sea of 24/7 television and social media. I earnestly hope that today's discussion on the subject, reporting to interpretation, a journey by media, may open a course for further deliberations and actions leading to the rise of media credibility. I am a rank optimist and believe that talking the flaws is also a path for remedying it. Indian media, which is the backbone of our nation, may strive better every day to stand upright with dignity and integrity. I take this opportunity to congratulate all the awardees on whose shoulders lie the future and relevance of media, and wish they continue keeping the spirit of New India and Golden Sword alive. Thank you for your patience. Thank you, sir. A request is made again. Please put your phone on silent mode. May I now invite Honorable Minister Shri Prakash Javadekar ji to kindly enlighten us on this occasion. भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का बहुत कुशल संचालन करने वाले हमारे मार्गदर्शक वेंकैया नायडू जी, चंद्रमौली कुमार प्रसाद जी, गुप्ता जी, सभी प्रेस काउंसिल के सदस्य, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि जिनको विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है, भाइयों एवं बहनों,
आज प्रेस डे है, नेशनल प्रेस डे। जैसे ही प्रेस शब्द आता है तो जुड़ा हुआ शब्द आता है प्रेस फ्रीडम, यानी नेशनल प्रेस फ्रीडम डे अगर कहेंगे तो भी बुरा नहीं है। और इस देश में आज़ादी के बाद, क्योंकि ब्रिटिश ज़माने में संपादकों को एडिटोरियल लिखने के लिए 6 साल या 10 साल भी जेल का सजा दी थी। आज़ादी के बाद ये खत्म हुआ, एक तरह से प्रेस समाप्त आज़ाद हुआ, लेकिन एक ही बार उस पर आँच आई 1975 में। मेरे पिताजी लोकमान्य तिलक जी के केसरी में पत्रकार थे। 25 जून को उनका नाइट शिफ्ट था और वो 26 को सुबह घर आते ही उन्होंने कहा कि आज तो अजीब हो गया। एक पुलिस अधिकारी आकर बैठा और उसने कहा सारे न्यूज़ पहले मुझे दिखाना है, वो देखकर हम मंजूर करेंगे, वही न्यूज़ जाएंगे। तो वो एक गुस्सा जाग उठा उसके खिलाफ, क्योंकि यह आज़ादी ख़त्म करना यानी विचार की आज़ादी, बाकी स्वतंत्रता ख़त्म करना जैसा था। और इसलिए हमने लड़ाई लड़ी। विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता थे, नेता थे उस समय, और हमने लड़ाई लड़ी और देश के लाखों लोगों ने लड़ी। उस समय के विपक्षी दल तो थे ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बहुत बड़े पैमाने पर बाहर आए उस आज़ादी को एस्टैब्लिश करने के लिए। और आज जो प्रेस फ्रीडम हम देख रहे हैं, इसका कारण उसमें थोड़ा गिलेरी जैसा हमारा भी कंट्रीब्यूशन है कि 16 महीने हमारे जीवन के उसी में लगाए, जेल में रहे सलाखों के पीछे। तब जाके ये आज़ादी ऐसी फ्री में नहीं रहती। उस समय कुछ समाचार पत्रों ने बहुत अच्छा एक धैर्य दिखाया, एक धाड़स दिखाया, लेकिन अनेक समाचार पत्र मैं देख रहा था कि ऐसे नहीं थे, वो झुक गए। तो इसलिए प्रेस को सही में खुद की कीमत समझने का ये दिवस है और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने का भी दिवस है, क्योंकि कोई भी फ्रीडम मुफ्त में नहीं होता, अनिर्बंध नहीं होता है। जैसे प्रेस काउंसिल है, यह प्रेस फ्रैटर्निटी का एक चुनी हुई संस्था है। सरकार केवल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करती है, लेकिन उनके काम में हम दखल अंदाजी नहीं करते। तो वो अपने एक आर्म्स लेंथ पर है और ये जैसा काम करती है वैसा काम करने की मूल धारणा होनी चाहिए। प्रेस वैसा रोल करते हैं क्या, ये देखने की जरूरत है। आज का विषय भी महत्वपूर्ण है कि रिपोर्टिंग और इंटरप्रिटेशन। ये इंटरप्रिटेशन शब्द में बड़ा गड़बड़ी की संभावना है और चंद्रमौली जी ने उसको बड़ा इंगित किया है कि पुरस्कार मिल गया एक एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग के लिए, और वो रिपोर्ट ही गलत था, सच नहीं था, झूठ था। तो ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता मैंने देखा है अनुभव से, क्योंकि मैं छात्र था लेकिन मैं जाता था मेरे पिताजी के साथ, पीटीआई का क्रीड भी देखता था और साथ साथ बाकी सारी प्रक्रिया देखता था। लेकिन एक न्यूज़ पाने के लिए, और उस समय तो बाकी कोई साधन नहीं थे, टेलीफोन से बात करके रिपोर्टर्स से
तहसील के रिपोर्टर से लेनी पड़ती थी न्यूज़, वो ज़माना देखा कि अपने न्यूज़ के लिए कितनी सावधानी बरतनी होती है। तो ये न्यूज़ है, मुझे भी रिपोर्टिंग का थोड़ा है लेकिन अनुभव है, और इसलिए ये इंटरप्रिटेशन में बड़ा गड़बड़ होता है। न्यूज़ अलग है, व्यूज़ अलग है। व्यूज़ होने का अधिकार है, लेकिन दूसरा व्यू भी होने का आज़ादी है। तो व्यूज़ अलग है, न्यूज़ अलग है, और लोगों को न्यूज़ मिलने का अधिकार है। लोगों का भी अधिकार है कि सही जानकारी मिले। फेक न्यूज़ जिसका उल्लेख किया चंद्रमौली जी ने, ऐसे फेक न्यूज़ आने लगे हैं। और अब सोशल मीडिया की क्या होता है, एक ट्विटर पे या एक सोशल मीडिया में आपने डाल दिया फेसबुक पे, तो दुनिया के हजारों उसके प्रिंट्स निकलते हैं, और फिर आप ट्वीट डिलीट भी करोगे तो भी वो जिंदा रहता ही है, वो खत्म नहीं होता। तो ये क्या तरीका है? मुझे लगता है कि फ्रीडम हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम, और वो रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम हमें जरूरत है। और आज फेक न्यूज़ का संकट है। मैं आज चाहूंगा कि आज प्रेस डे के निमित्त से प्रेस वाले भी मंथन करें, क्योंकि आपका टीआरपी भी बिगड़ रहा है, क्योंकि फेक न्यूज़ का टीआरपी ज़्यादा तेज होता है। तो आपको चिंता करना है कि समाज 20 लोग मरे। एक झूठ खबर चली कि चाइल्ड लिफ्टर्स आए हैं, ये लोग चाइल्ड लिफ्टर ऐसे दिखते हैं। ऐसा एक अफवाह फेक न्यूज़ के रूप में आती है, और वो 20 लोगों की जान लेता है। अच्छा, ये भी एक है गुप्ता जी, लिंचिंग की चर्चा होती है, तब एक लिंचिंग की चर्चा देश में होती है, लेकिन ये 20 लोग लिंचिंग से ही मरे उसकी चर्चा नहीं होती है। तो ये भी एक देखने जैसी बात है। तो ये मेरा कहना है कि जो भी फेक न्यूज़ का संकट है, वो पेड न्यूज़ के संकट से ज़्यादा है। मैं जब प्रेस काउंसिल का मेंबर था, राज्यसभा का सदस्य करके मैं पहले होता था, तब प्रेस काउंसिल में सबसे बड़ा विषय था पेड न्यूज़, और चुनाव के समय में पेड न्यूज़ कैसी होती है इसका ज्ञान हमसे ज़्यादा। तो ये जो होता है, लेकिन आज पेड न्यूज़ का संकट पीछे गया, अब साधा सीधा संकट है फेक न्यूज़ का। और इसलिए फेक न्यूज़ के संकट का कैसे सामना करें, इसकी चर्चा होनी चाहिए, और सरकार को आप सुझाव भी दे सकते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा, परसों प्रधानमंत्री जी ने एक न्यूज़ आई, प्रधानमंत्री जी ने मुख्य चीफ जस्टिस को पत्र लिख के धन्यवाद दिया कि अयोध्या का आपने निर्णय ऐतिहासिक दिया। कमाल होगी, कोई पदों की गरिमा है, कुछ नहीं। झूठ बोले कौवा काटे, ऐसा पहले कहते थे, अब झूठ बोले बहुत फैलता है, कौवा नहीं काटता है, कौवे को भी समय नहीं मिलता है काटने के लिए। और इसलिए ये काम हमें करना चाहिए, इसकी चर्चा हो, फेक न्यूज़ बंद हो, इसके लिए काम करें। ज़्यादा समय नहीं लेने की ज़रूरत है। लेकिन आज गुलाब जी को पुरस्कार मिला है। गुलाब जी का मेरा आंतरिक स्नेह पिछले 20-25 साल से है, और मुझे बहुत आनंद हुआ जब उनको ये पुरस्कार की घोषणा हुई, क्योंकि वो एक स्वतंत्र, केवल एक समाचार पत्र चलाने वाले नहीं है, उनका खुद का विचार है, और विचार के इतने किताब उन्होंने लिखी है। भारतीय चिंतन परंपरा में उनका भी निश्चित एक योगदान कहा जा सकता है। इतना बहुत अच्छे किताबें उन्होंने भारतीय शास्त्र पर लिखी है, और बाकी भी सभी जो आज पुरस्कार 8 कैटेगरीज में है, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं, और सबको इस दिन की शुभकामना देता हूं। आज शाम को फिर मिलेंगे। जय हिंद।
Thank you, sir. The Press Council of India is delighted to release its first directory since 1966. It is my privilege to request the Honorable Vice President to please do the honor of releasing the directory of Press Council of India. To foster a sense of responsibility and public service among all engaged in the profession of journalism, the Press Council of India, in light of the adjudications made by the Council, presents an updated version of the journalistic norms. May I request the Honorable Vice President to please do the honor of releasing the 2019 edition of Norms of Journalistic Conduct. Thank you, sir. To mark this very special day, the Press Council of India has brought out the souvenir 2019 titled Reporting to Interpretation, a Journey. May I request the Honorable Vice President to please do the honor of releasing the souvenir 2019. Thank you, sir. With an innovative approach for recognition of talent within the journalistic community and acknowledging the ethical growth in journalism, the Press Council of India instituted the National Award to honor journalists, photojournalists, freelancers excelling in print journalism in various fields on the occasion of the National Press Day. The awardees of this year were finalized by the distinguished jury led by Shri Jaishankar Gupta ji. May I now request His Excellency the Vice President of India and Honorable Minister to please honor the awardees selected by the distinguished jury members. The prestigious Raja Ram Mohan Roy National Award for Excellence in Journalism is awarded to eminent journalist Shri Gulab Kothari ji for his outstanding contribution towards journalism. May I request Shri Gulab Kothari ji to please come to the dais and receive the honor. Thank you. The award in the category of rural journalism has been jointly conferred upon Shri Raj Chingappa, Group Editorial Director, India Today, and Mr. Sanjay Saini, Correspondent, Dainik Bhaskar, for his article titled Bharat Japan की यारी मंडी जिला में किसानों की खेतों में लिख रही है विकास की नई कहानी. May I request both of them to please receive the honor.
Thank you. The next award in the category of developmental reporting is jointly conferred to Sri Shiva Swarup Avasthi, senior reporter, Dainik Jagaran, for a series of articles on Badhali Pathaki, and Sri Anu Ibrahim, sub-editor Mathrubhumi, for a series of articles covering the Nipah outbreak in Kerala, titled Arogya Keralam, Learning Not. Thank you. The next award in the field of photojournalism in single news picture category is jointly conferred upon senior photographer Sri P.G. Unnikrishnan from Mathrubhumi, New Delhi, and news photographer Sri Akhil E.S. Mathrubhumi for their striking photographs carrying a message. Thank you. The next award in the photo feature category is awarded to Ms. Shipra Das, consulting editor photography, India Empire Magazine and Parliamentarian Magazine, for her photo feature on Sahil's journey with AIDS. The award in the category of sports reporting is conferred upon Sri Saurav Duggal from Hindustan Times, Chandigarh, for his article published under the caption "Rugby Gives Wings to Tribal Girls from Impoverished Bengal Village." Thank you. The next award in the category of gender-based reporting is jointly conferred upon Ms. Ruby Sarkar, Special Correspondent Deshbandhu, for Mithila ki himmat se Atmanirbhar hua, for her article on Mithila ki himmat se Atmanirbhar hua Sadi Khera ke gaon, and Ms. Anuradha Mascarenhas, senior editor, The Indian Express, for her article captioned "Locals at Araku Valley help reach out to tribal women, ensure zero maternal deaths in last 2 years." Ms. Mascarenhas. Today's final award in the category of financial reporting is jointly conferred upon Mr. Krishna Kaushik and Sri Sandeep Singh for their co-authored series of articles with the Indian Express. May I request both of them to please come forward and receive the award. Thank you, everyone. I am deeply privileged to invite His Excellency the Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu ji, to deliver the inaugural address.